data structure is nothing but it is a concept. It is a concept. It is the set of algorithms. How to organize the data. This is the concept, or this is the technique with which we have to organize the data. So once we are organizing the data may be organized in different forms, in different ways, in different techniques. So once you are organizing the data in different techniques, we need different type of algorithms to handle with the data. So once we are handling with different type of data organizations, we have different algorithms to handle them. So when there is an algorithm, concept of algorithm or need of an algorithm, we have to write a program to do that, or to verify that whatever the algorithm are giving, whatever the organization rule we are giving, whether it is properly working or not with your data. So we have to write a program. So in which programming language we will write this? It may be either in C or in C++ or in Java or in Python or in any language you can use. But since in first semester we have read C, so that is why in our syllabus it is using C. But if you go to market and search for a data structure book, there are several types of book in data structure. Using data structure C++ we have to read the data structure using C. So you can read the simple data structure book and you can implement that programs or the algorithms using C language. That is the best way. I think everybody is understanding Uriya, or anybody is there who is not understanding Uriya, so I shall use English is the better way. So if I will go for reading data structure book only, that will be best, because once you read data structure concepts, you have to write your own programs by your own. But what happens now, the students are reading the book data structure using C, and since already the programs are given there, written there, ସେମାନେ ତ ଖାଲି କପି କରିଦଉଛନ୍ତି ଆଣିକି କହୁଛନ୍ତି ଆମର ପ୍ରୋଗ୍ରାମିଂ ହେଇଗଲା। ତ ସେଇଥିରେ ଆମେ ପ୍ରୋଗ୍ରାମିଂ ସ୍କିଲ୍ ଇଜ ନଟ୍ ଡେଭଲପ। So you better you read the book data structure, only book data structure, and once you have understood the algorithms, you write your own program. ନିଜେ ଲେଖିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କର, ବହିରୁ ଉତାରିକି ଲାଭ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଆମ କାମ ହଉଛି ଆମେ ଡାଟା ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର କନସେପ୍ଟ କୁ ପଢିବା, and once the concept is clear, we will try to write our own program. ନିଜେ ଲେଖିବା, ସେଟା ହଉଛି ସବୁଠୁ ବେଷ୍ଟ ୱେ। But your material, whatever you are getting from the IGNOU, that is already the book data structure using C. The materials are already, the programs are already written in C. So it is easy for you to read the material because it is already in C. But my opinion is you read only the algorithm, you read only the techniques, and then try to write your own program. ବହିରୁ କପି କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବନି, ନିଜେ ପ୍ରୋଗ୍ରାମିଂ ଲେଖିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ସେଟା ଆମ ପାଇଁ ଭଲ ହୁଏ। ଆଚ୍ଛା,
then subject data structure. That I will go for machine learning. If I will go for is a technique with which सर अपन सर आपन माइक्रोफोन म्यूट अछि पात्र सर हेलो पात्र सर आपन माइक्रोफोन म्यूट अछि बोझे ये करू छी जे हां हला एबे हला अनम्यूट हला बते नाउ यू आर एबल टू हियर यस सर यस now you are able to hear yes sir. So now I will define what is the data structure. I will write something here. What is the data structure? So data structure is nothing but the organization with which data structure is the organization with which data is processed. Data is processed in the primary memory. In the primary memory. That is your data structure. The organization with which data is processed in the primary memory is known as data structure. So you know in our any system the storage of the secondary memory is very high. This is our secondary memory. This is our secondary memory which is huge in volume size, and we have the primary memory, and this is our primary memory which is less in size. Less in size. sir your screen is So whenever not shared your screen is not shared. Present now. Your entire screen. तापर मैं कौन करथिले एबे दिसला मो स्क्रीन ना सर हां अबे आसु आसु हां स्क्रीन दिसला मो जा छी हां अपन से जाम जाम ये को क्लिक करले ता ऊपर आसीबो सेटा करछन ता ऊपर लिखु चंदी तो हां मो लिखि छी देखाउ देखाउ नै किछि हां टिके स्लो तो बोले आसीबो पर टिके टाइम डेटा लागो स्ट्रक्चर इज ऑर्गेनाइजेशन हां लिखु छी त मोर इट इज हां शेयरिंग योर स्क्रीन देखा गला सर दिखाला ओके गुड दिसला Yes sir, yes. देखा जाउची Yes sir. यस सर Yes, sir. तेणु एटा को जदि नोट कर दियो मु कोन लिखिली डाटा स्ट्रक्चर इज द ऑर्गेनाइजेशन with which data is processed in the primary memory. So this is the main definition of data structure. It is the organization with which data is processed in the secondary memory. So then to understand this, what is this meaning? You know every system has a secondary memory and a primary memory. Secondary memory is huge in size. It can store lots of data, but our primary memory is less in size. Now if somebody will ask me, then why not I do every secondary memory to a primary memory? मैं मु काहे कि ना सब जगह secondary memory को primary memory कर देबी
मो रैम टा कहीं एते बड़ न कर देबी कि सब किछि मोर सेठी स्टोर हे जिवो नो इट विल बी वेरी डिफिकल्ट टू डू दैट बिकॉज़ इट इज वेरी कॉस्टली RAM is very costly as comparison to your secondary memory so I cannot do the RAM as the huge in volume as comparison to your secondary memory so I have to store the data in the secondary memory and whenever my program requires I have to bring them from the secondary memory to the primary memory मोर secondary memory टा बड़ साइज रो प्राइमरी मेमोरी टा छोट साइज रो रैम टा होची छोट साइज रो तो किंतु मु सब जाक प्राइमरी मेमोरी कर दे पारिबिनी जने कहबो नै रैम सेकेंडरी मेमोरी को चलो प्राइमरी मेमोरी कन्वर्ट कर दबा नो इट इज नॉट पॉसिबल बिकॉज़ द कॉस्ट ऑफ सेकेंडरी मेमोरी इज हाई as comparison to your primary memory so आमे प्राइमरी मेमोरी 4 जीबी रखुचू 8 जीबी रखुचू एबे तो एतिकी वॉल्यूम रो प्राइमरी मेमोरी आसी गलानी किंतु आज 10 वर्ष तले प्राइमरी मेमोरी आमे यूज करदु 256 MB तो सेही मेमोरी कैपेसिटी हमको प्रोग्रामिंग करबा को पडुथिला तो आमे जहां भी डाटा को सब रखुथिले कोठी ना सेकेंडरी मेमोरी रे जेतेबेले प्रोग्राम एग्जीक्यूट होउथिला कोठी ना प्राइमरी मेमोरी रे डाटा टा कोठी एग्जीक्यूट हबा आसी के प्रोसेसिंग हबो सेही प्राइमरी मेमोरी रे तो since the volume of data is more and we have to keep them in the secondary memory but the processing we have to do in the primary memory we need some organization we need some technique we need some algorithms with which data has to be processed in the primary memory डाटा केबे सेकेंडरी मेमोरी रे प्रोसेस हबोनी डाटा रहिबो सेकेंडरी मेमोरी रे किंतु प्रोसेस हबो प्राइमरी मेमोरी तो जेतेबेले भी तुम गोटे प्रोग्राम टे लिखुचो जेतेबेले भी तुम गोटे प्रोग्राम टे लिखुचो प्रोग्राम को रन करूछो से रन हबो आसिक रे प्राइमरी मेमोरी रे किंतु स्टोर हबो सेकेंडरी मेमोरी रे तो वी हैव टू write or we have to design the algorithms with which data has to be processed in the primary memory सेटा को हमें कहले data structure so now understanding what is the meaning of data structure I will tell you what is file structure data structure कोन तमे बुझी गलो नेक्स्ट हमें कहिबा what is file structure अच्छा एटा क्लियर केमती होबो स्क्रीन टा अच्छा सेकंड स्क्रीन को पळेबा ठीक अछि file structure so what is file structure so what is file structure the organization with which data is stored in the secondary memory is called file structure okay so we now understood what two types of organization of the data one is primary memory रे केमती ऑर्गेनाइजेशन होउची डाटा टाकू जोटा को हमें कहिले डाटा स्ट्रक्चर सेकेंडरी मेमोरी डाटा टा केमती स्टोर होउची सेटा को हमें कहिले फाइल स्ट्रक्चर so we have two different types of organization of data one is data structure another is file structure so these two are two different subjects now we have to in this course we have to read only the data structure not the file structure so there is another subject with which we are reading the concept of file structure so database management system is also a part of this file structure गोटे subject or part टा होची हमरो database management system that we are going to read in the third semester or sorry this semester only so your data structure subject or the course we are going to read in MCS 21 so very clearly what is the meaning of data structure now it is the organization with which data is processed in the primary memory सेटा को हमें कहू data structure अच्छा तेणु एबे हमें पढिबा data structure को केमती प्रकार क्लासिफाई करिछु there is a classification of data structures how we have classified the data structures classification of data structure two ways primitive or basic data type first type of classification of data structure in the left hand side I have written primitive or basic data type and in the right side I am writing this is the non-primitive data structure non-primitive data structure are classified into two types linear data structure and non-linear data structure linear data structure and non-linear data structure linear data structure are classified into 3-4 types array stack
stack, 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 queue and linked list. Okay, so they are the linear data structures. And what is non-linear data structures? Tree and graph. They are the non-linear data structures. So data structure को केमते क्लासिफाई करा है ना primitive and non-primitive. Primitive data structures are the basic data types like your integer, float, character, double, etc. They all are the primitive data structures. So what is primitive data structure? Data structures which are already defined in the compiler. जो already पाखरे compiler पाखरे define की अच्छी. आपको हमको डिफाइन किया तो नहीं. मुझे लिखी कि it is the what is the meaning of integer? I have to display to the compiler because this type of data structure, data type is already inside the system, already inside the compiler. So we don't have to declare that again. But in case of non-primitive data structures, there are no such type of data structures already with the compiler. You first have to declare them, then only you can use them. तमे निजे तैयारी करिवो निजे ताकू यूज करिवो. If you want to eat any food, first you are cooking it, then you are using it, eating it. तो तमे निजे कुक करूचो तापर निजे खाउचो. तेणु सेमिति मोर गोटे नॉन प्रिमिटिव डाटा स्ट्रक्चर यदि यूज करिवार अछि, first I have to create it. Once after creating it only I can use it. मु create न करि करि ताकू यूज करि परिबि नाही. So that is known as your non primitive data structure. So the basic difference between primitive and non-primitive data structure is primitive data structures are already there with the compiler. Non-primitive data structure is the user-defined data structures, data types. User-defined data types को हमें कहबा non-primitive data structures. जोटा को हमें तैयारी करिबा तापर हमें यूज करिबा. तो it is classified into two types, linear as well as non-linear. Linear कौन कहउची ना array, stack, queue and linked list. They all are the linear types. So what is the meaning of linear data structure? I will write here. So linear data structure meaning is linear data structure. There is a successor and predecessor relationship among the data elements. That is no linear data structure. Relationship among the data elements. That is a linear data structure. ता माने कोन कि एलिमेंट गुडा सदा बेले गोटे एमिति ऑर्डर रे रहंती जार कि गोटे एलिमेंट रो प्रेडिसेसर गोटे थिबो. प्रेडिसेसर माने कोन ता पूर्व एलिमेंट, सक्सेसर माने ता पर एलिमेंट. लाइक इफ यू कंसीडर द एग्जांपल ऑफ एन array 5 10 15 20 25, let they are the elements. So 10 has the successor of 15 and 10 is has the predecessor 5. So whenever in any collection of elements there is a successor predecessor relationship type, that is known as linear data structure. मने कर मो गोटे लाइन रे ठिया होउची, गोटे क्यू रे ठिया होउची, तो मो आगरे गोटे लोकटे ठिया हिताय, मो पछरे जने लोक ठिया हिताय. So my relationship among the data structure in the data structure is successor predecessor relationship. आरे रे सेमती स्टैक हमें पढिबा सेथरे भी सेमती, लिंक लिस्ट रे सेमती. तो कोनोसी भी डाटा स्ट्रक्चर रे यदि रिलेशनशिप से टाइप रो थिबो हमें ताकू कहिबा लिनियर डाटा स्ट्रक्चर. अदरवाइज हमें ताकू कहिबा non linear data structure. So what is the non linear data structure? Non linear data structure says the relationship among the elements are hierarchical. The relationship among the elements are hierarchical. Or there is a parent-child relationship. There is a parent-child relationship among the data elements. अच्छा जे जे सब अटेंड करू छ सुनी बुझी पारू छ ना किछि डाउट अछि यदि पचारि भी पारिबो. If anybody has any doubt at any instance, you can ask me. Yes, sir. Acha, till now just I have what I did. Now I defined what is a data structure.
the classification of data structures, and last screen. स्क्रीन टा पड़ गला जो हम लिखुथिले yes. So till now, what defined was the meaning of data structure, the classification of data structures. This so in that whole subject, you have to read these things. What is array? What is stack? What is queue? And this is the total subject. Whatever we have divided the data structure into various classifications, every classification we have to read, and that is our course. MCS 21 is that. And you read all these what there in that data structure, the course is complete. So you have to start with array, queue, list, tree, and graph. You read them separately, and what are the various algorithms, every data structure has read them separately. Once it is complete, the subject is complete. Okay. So now I will tell you what is operation in a data structure. Operation data structure. The first operation is insert. Insert s comma x. The meaning of this is x is a new element, and I am going to insert the new element into an existing data structure. Meaning is, let I have an array. भाविनी मो गोटे array टे अछि. Array तो पढिছো तमे first semester what is an array. So let I have an array, and I want to insert a new element into that array. ताकि कोठी insert करि परिबा से array को जगह में insert करि पाया in position. In array you can insert a new element at any position. So you have to define the position, and you have to insert the new element. But if I am talking about a queue, what a queue, I will ask to insert a new element. At that time, nobody has to ask where to insert, because in a queue, you know, every time in a queue, new element is inserted at the end. So in that case, nobody has to ask where to insert. So behavior of the data structure, every behavior of the data structure decides what to do in that data structure. तो तमे बे कहबो क्यू रे मु गोटे लोक को मझी रे इंसर्ट कर देबी ताले सेटा क्यू हबनी भाबिने 10 जन ठिया हिचंदी जने नुवा लोकटे आसीला ताकू जदि मु कहबी तू मझी रे पसी जा then it will not be in queue, it will be array. So generally while writing the problems or writing the programs, students ask why should not I insert a new element in a queue in the middle of the queue. So if you are trying to do that, it will become not a queue, it will not become a queue, it will be some other data structure. Because what I told you, all the non-primitive data structures, you are creating it and you are using it. तमे ताकू क्रिएट करिवो तमे ही ताकू यूज करिवो. मु जदि तयारी करिवारे मो कांसेप्ट ताकू भूल रखुची ताले मो तयारी तरीका ही भूल हेजिवो, मो तयारी प्रोसीजर भूल हेजिवो. तो आमे मु जेमिति कहली whenever you are cooking a food, whatever the food with some rule you are preparing it, the food has a giving a name of the food and you are creating it, you are cooking it, and you are using it. सेमिति गोटे डाटा स्ट्रक्चर टे मु तयारी करिबी मु ताकू यूज करिबी तनु जते while I am creating it I have to follow the concepts of that data structure. तो से concept दबो किए तमे बे कहबो तमे से concept दबो किए हमकु. So every data structure has different concepts, on different theory it has been created. मु जदि काली को गोटे नुवा डाटा स्ट्रक्चर डिजाइन करिबी जार कि किछि भलो थिबो तार किछि भलो एल्गोरिथम्स थिबो भलो प्रोसीजरल स्किल थिबो ताहले से डाटा स्ट्रक्चर को दुनिया लोक यूज करिवे. आज क्यू को समस्त काहे यूज करूचंती. नाउ क्यू डाटा स्ट्रक्चर इज वेरी पॉपुलर एंड एवरीबॉडी इज यूजिंग दैट. एंड छोटो हम जानिछु व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ए क्यू. क्यू बोली कोनोसी जिंस नाही. We have given the human beings has created it and they have given the name as queue. और ताको हमें छोटो रो पढुछु, this is the queue, this is the concept, this is the technique.
we have to follow in a queue. Kaiki na eta gote data structure which is most popular one and it is very useful one in solving many problems. गोटे क्लास रे भाबिने 100 पिला बसिचंती सेमान को हम कहबे क्लास टा सरीला बाहरी पड़ो बड़ा पिटा है कि बाहरीबे कि आगरे कहबे समस्त कहबे मो आगरे बाहरी पड़ी पड़ी जिवे सब तो आमे सेठी कोन करलु ना आमे कहलु यू मेक ए क्यू इन द बेसिस ऑफ ए रोल नंबर एंड लीव द रूम तो सेठी आ झगड़ा हलानी डिसिप्लिन रहिला काम भलती हे गला सो क्यू इज ए डाटा स्ट्रक्चर व्हिच इज the concept is defined by the human being and the human being are also using it. So in the same way, whenever you are writing and designing a data structure, if it is conceptually correct, if it is valuable in solving many problems, then that concept of your data structure will accepted by everybody and people will try to use it. किंतु जदि मो डाटा स्ट्रक्चर कांसेप्ट ठीक नथिबो तार जदि यूजफुलनेस नथिबो ताहले ताकू के यूज करिया कथा भाबिबेनी तो आमे बे जत्ते भी डाटा स्ट्रक्चर एठी मु डिक्लेयर डिफाइन करी छी जो लिखी छी एथिरे जत्ते भी डाटा स्ट्रक्चर दे आर ऑल यूनिवर्सली एक्सेप्टेड डाटा स्ट्रक्चर्स and that data structures are very much helpful in solving many problems of real life or real computational problems बहुत गुडा प्रॉब्लम को सॉल्व करिबारे से को हेल्प करंती तेणु ताकू लोक आज यूज करूछन्ते भविष्यत रे यूज करूथिबे सेटा होची हमरो काम हाउ टू डिसाइड व्हिच डाटा स्ट्रक्चर हैज टू बी यूज्ड ओके सो एवरी डाटा स्ट्रक्चर हैज सेवरल ऑपरेशंस several built-in operations. First operation is insert s comma x. What is the meaning of this? Is insert a new element x into the existing data structure s. So that is your insert operation. मु कहबी insert गोटे q आ गोटे नुआ एलिमेंट रो नाट देबी ता माने व्हाट यू हैव टू अंडरस्टैंड ना से एलिमेंट टा को हमको लास्ट रे इंसर्ट करिया को पड़िबो यदि 10 जन ठिया छै 11 नंबर रे इंसर्ट हबो यदि 20 जन ठिया छै ताले 21 नंबर रे इंसर्ट हबो मु तुमको सेठी कहिबा दरकार नै कि एलिमेंट टा को नै कि आग्रे इंसर्ट करो मध्य रे इंसर्ट करो बिकॉज़ इट इज द क्यू द डाटा स्ट्रक्चर theory is whenever a new element is coming to a queue it has to be inserted at the last किंतु जदि मु गोटे array रे इंसर्शन पई तुमको कहिबी ताले मु तुमको पोजीशन टा को ही दबा को पड़िबो कि एलिमेंट टा को को जगह रे इंसर्ट करिबारे अछि that is your insertion technique in various data structures. So in general mu kon likhili insert s comma x means inserting a new element x into an existing data structure s. Okay, so the next operation is delete s comma x. This operation deletes an element x from the data structure s. तो delete operation कौन करे ना ये delete करे गोटे एलिमेंट को काकू ना x को delete करिवो सेई array s रो सेई array नै सेई डाटा स्ट्रक्चर s रो तापर ऑपरेशन हमर आसे insertion पड़िलो deletion पड़लो sorting s means you have to arrange what this operation does arrange in ascending order or in descending order the data structure s गोटे जो डाटा स्ट्रक्चर अच्छी it may be an array it may be a linked list or it may be whatever may be it will arrange them in ascending or in descending order that is sorting then searching s comma x it searches an element x from s ये सर्च करिवो तमरो एलिमेंट को सर्च करिवो करिवो से ना नहीं and if it is there it will tell you the position where it is present and if it is not present it will say yes the element is not present that is the searching operation. Then next operation is merging s1 comma s2
So what this operation does, it merges. Merges meaning कौची S1 and S2 to create a new data structure S. भाविने मो पाखरे गोटे बैंक रो दीटा ब्रांच अछि गोटे ब्रांच in Delhi, gote branch hochi Mumbai. So data is collected in Delhi branch and data is collected in Mumbai branch. What I want to do at the year end, I want to make the balance sheet of that data. So what I will do, I will merge the data of the two different cities and then I will prepare the balance sheet. So there the merging operation works. Data different data structure को धरी करी मु ताको merge करी. So they are the different operations. Insertion, deletion, sorting, searching, and merging. So they are the different operations in a data structure. Okay. So these all are the operations in a data structure. Now we'll read what is an algorithm. एटा सरीला डाटा स्ट्रक्चर मानेटा कोन मु बुझेली डाटा स्ट्रक्चर को क्लासिफाई करैली डाटा स्ट्रक्चर रे कोन कोन ऑपरेशन हे परिबो मु कहली तापर हमें एके सब्जेक्ट को जीवा वर्तमान जस्ट नाउ वी हैव completed what is the classification and what are the different operations. Now we have to go to the subject. So what is the meaning of an algorithm? Because from the beginning I am telling you, whenever you are reading this subject, you have to write several algorithms, you have to write various algorithms and you have to program them. So every data structure has different set of algorithms. So since I am using the word algorithm, we have to know what is the meaning of the algorithm. What is the meaning of the algorithm? The meaning of the algorithm is the step-by-step procedure to solve a computational problem. Algorithm is nothing but is a step-by-step procedure to solve a computational problem. तो algorithm कौन करे ना गोटे problem को step by step solve करिवार रास्ताटा तुमको बतैबो. So if I want to find out the average of 10 numbers, if somebody will ask me to write an algorithm for this, I have to think how to do this. So how we are doing this? Now we are taking first sum equal to 0, then I am reading first number, adding with the sum, then I am taking the second number, adding with the sum. Similarly, while 10 numbers has been added, सेमती करी करी जतले तमे 10 टा नंबर को ऐड करी दबो, you have to stop the processing and you have to divide the sum by 10 to find the average. So that is the algorithm for this. If I will ask you, I want to find the shortest distance from Kid Square to railway station, so I have to write an algorithm because there are several ways or the several paths or the several road with which I can reach from Kid Square to railway station. But if somebody is asking me, you write the shortest path or with the shortest cost, can I be able to reach from Kid Square to railway station? So then we have to design an algorithm for that. So algorithm is nothing but a step by step procedure to solve a problem. So तमे जतले algorithm टाको लिखिबो ताको प्रोग्राम करिवो, and if you give to the system, if you give to the computer for huge volume of data also, it will able to give the answer quickly. देखो algorithm केबे computer लिखेनी, algorithm के लिखिबो, the human being will write the algorithm, and once the algorithm has been written, it has to be programmed by the human being, and once it has been programmed with any volume of data, the algorithm works without any error. सेटा ही गोटे डिफरेंस होची गोटे मनुष्य भितरे आ गोटे कंप्यूटर भितरे. प्रोग्राम कंप्यूटर केबे बनाएनी, प्रोग्राम आमे बनेइबा. ताले हम कंप्यूटर को यूज कहीं करूछु, जदि हमें प्रोग्राम बनौछु हमें कंप्यूटर को यूज करूछु because of its several features of a computer. What is the feature? ना से स्पीड काम करे,
से एक्यूरेट रे काम करे से केबे थकेनी स्टोरेज बहुत जगह से डाटा रखी पारे जोटा कि हमें रखी परिबानी हां हम पाखरे अच्छी स्किल अच्छी हमें एल्गोरिदम लिखि पारुछु हम पाखरे टैलेंट अच्छी स्किल अच्छी किंतु ता पाखरे से टैलेंट नाही किंतु ता पाखरे किछटा शक्ति अच्छी कोन नाही सब शक्ति एफिशिएंसी हां स्पीड एक्यूरेसी एंड इट वर्क्स विदाउट स्ट्रेस तमे दिन सारा काम कराओ कंप्यूटर काम करिवो केबे भूल करिवोनी थरे जदी प्रोग्राम टा ठीक लिखा जाईची with any volume of data it will work so algorithm is nothing but it is a step by step procedure to solve a computational problem so every algorithm has several characteristics so कौन characteristics थाए अच्छी प्रति algorithm रो first होची input second होची output third होची effectiveness fourth होची definiteness and fifth होची finiteness so they are the different characteristics of any algorithm input what is the meaning of input every algorithm takes some input the input no नहीं कि काम केबे algorithm करि परिबो नाही what is output every algorithm returns some output it takes input process it and gives you some output what is effectiveness every line of code whatever you are writing in your algorithm it effectively solves a part of the problem हमें बेले बेले प्रोग्रामिंग लिखू हमें कहू ए प्रोग्राम टा इफेक्टिव नुहे though it is giving the answer though it is giving the solution of a problem but the program is not effective जेमति हमें गोटे मेडिसिन खाऊ कहू एटा इफेक्टिव नुहे काहे कि ना से इफेक्टिवली काम करूनी काम करियो जरटा होची भलो करिया पे लागिवो 25 दिन लागिवो 20 दिन लागिवो କିନ୍ତୁ इफेक्टिवली से काम करूनी तेनु हमको सदा इफेक्टिवनेस खोजिबा को पड़े सब जिंस डेफिनेटनेस whatever the code you are writing must be definite means it is not ambiguous ambiguous माने हमें कोनटा को कहू कोटा को ambiguous बोली कहू जो ठीक कोनोसी भी जिंस रो कोनोसी भी लाइन ऑफ कोड रो इट हैज क्रिएटिंग टू मीनिंग्स मोटे सेंटेंस टा कहबी तार जदी डबल मीनिंग थिबो सेटा हमें कहू द सेंटेंस इज ambiguous को सेंस रे तमे कहि छ हमें बुझी पालुनु सेटा होची ambiguous तनो whenever you are writing a program also your program or whatever the code you are writing must be unambiguous that is definiteness of the code then finiteness means every statement you are writing must be finite the finite number of times execute होबा कथा तापरे से stop हे जिबा कथा तापरे से stop हे जिबा कथा finiteness तमे लूप लिखुछ बेले हम कहू लूप टा इनफिनिट लूप हे गला व्हाई हमें को एटा इनफिनिट हे गला काहे कि ना से कोड रो एग्जीक्यूशन केबे सरीबोनी काहे कि सेटा इनफिनिट लूप ते लिखा हिच तो finiteness is very much necessary while writing any program so that is your algorithm characteristics एतिकी characteristics प्रति algorithm रो रहिबा कथा अच्छा and how to represent an algorithm representation of an algorithm number 1 flowchart number 2 pseudocode and number 3 high level language तीन प्रकार रे हमें हम निज algorithm डा को रिप्रेजेंट करि परिबा कोन कोन ना गोटे होची flowchart गोटे होची pseudocode आ गोटे होची high level language तो सिस्टम केवल हाई लेवल लैंग्वेज बुझे से ऊपर दिटा को बुझेनी बट ए ह्यूमन बीइंग अंडरस्टैंड फर्स्ट टू हाई लेवल लैंग्वेज के बुझे जे सेथरो ट्रेंड हे थाए मु एबे जणन को जावा प्रोग्राम से जानिनी ता कोइ तो ए प्रोग्राम ता देखि मते बुझा कोन ये करूची से कहि परिबोनी बट इफ आई एम ट्रेंड इन राइटिंग जावा प्रोग्राम्स अंडरस्टैंडिंग जावा प्रोग्राम्स देन आई विल अंडरस्टैंड व्हाट इज दिस हाई लेवल लैंग्वेज इज डूइंग बट द flowchart and pseudocode every person understand समस्त बुझी परिबे गोटे फ्लो चार्ट हो सुडो कोड को हाई लेवल लैंग्वेज केवल सिस्टम बुझीबो और जो माने ट्रेंड पर्सन हेतिबे सेतर से माने लिखि परिबे बुझी परिबे
but all cannot be write a high level language. ତେଣୁ ଆମର flow chart ଆଉ pseudo code use କରାଯାଏ for the general person. ଗୋଟେ ଲୋକ ତାକୁ କରିବ ଯେ ପ୍ରୋଗ୍ରାମିଂ ଜାଣିଛି ସେ ତାକୁ ହାଇ ଲେଭେଲ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ରେ କନଭର୍ଟ କରିବ। ତେଣୁ ମୋର ଏଇ ସବଜେକ୍ଟ ରେ ବି କାମ ହବ, ଗୋଟେ ଟିଚର ରହିଥାଏ ସବଜେକ୍ଟ ରେ କାମ କଣ ଥାଏ, ଏଇ ଯୋଉ ସବଜେକ୍ଟ ରେ ସେ ତମକୁ ସୁଡୋ କୋଡ ଲେଖିକି ଦେଇଦବ, ତମକୁ ସୁଡୋ କୋଡ ଟା କହିଦବ, ତମ କାମ ହଉଛି ତାକୁ ହାଇ ଲେଭେଲ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ରେ କନଭର୍ଟ କରିବ। ଯେହେତୁ ଆମ ସିଲାବସ ଡିମାଣ୍ଡ କରୁଛି ସି ରେ ଆମକୁ କନଭର୍ଟ କରିବାର ଅଛି, ତେଣୁ ଆମେ ଆର ପ୍ରୋଗ୍ରାମିଂ ଗୁଡା ସି ରେ କରିବା। କିନ୍ତୁ ସବଜେକ୍ଟ ରେ ତମକୁ କିଏ ସି ରେ ପ୍ରୋଗ୍ରାମିଂ କରିକି ଦବା କଥା ନୁହେଁ, ସେଟାକୁ ପ୍ରୋଗ୍ରାମିଂ ଲେଖିବା ହଉଛି ତମ କାମ। As a student, you have to write the programs for the algorithms whatever being given in the subject. Okay, so these are the algorithm कौन बुझिलो, how to represent an algorithm technique जानिलो। Now come to efficiency. How to compare algorithm. Let there is a problem. Let there is a problem. A. I have given to two students or two persons. जणे गोटे algorithm लिखिला algorithm 1, same problem टाको solve कला आउ जणे लिखिला algorithm 2, same problem टाको solve करले दी जण जाको दीटा different way रे से माने algorithm लिखिले। एबे क्वेश्चन होची को algorithm टा बेटर, जणे लिखिची गोटे उपाय रे आउ जणे लिखिची आउ गोटे उपाय। The question is which algorithm is better. So we have to study the algorithms, and what to study on that algorithm? We will study two parameters. First is the time complexity. हमें दीटा जिनसे तार स्टडी करिबा, गोटे होची टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आ गोटे होची स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। हेलो हेलो ऑनलाइन अछि ना ऑफलाइन गलनी। हेलो 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 हाँ सुबुची मु जहा कहूची सुबुची सर। हेलो हाँ सर सुना मतलब जाउची, मु जहा कहूची सुबुची ना सुबुनी सुना जाउची, सुना जाउची सुना जाउची, देखा भी ओके जाउची। थैंक यू सर। देखा भी जाउची। अच्छा एबे जाय किछि डाउट अछि, एबे जाय डाउट अछि पिलांकर जहा पढुछो किछि डाउट अछि एबे जाय? हाँ सर। अच्छा मु ताले एबे कोन कहली ना व्हाइल कंपेयरिंग एल्गोरिथम्स कोन डाउट अछि देखो सर जो प्रेजेंटेशन ऑफ किछि एल्गोरिदम रे पचारिबार जो अछि देखो। हाँ सर सर प्रेजेंटेशन ऑफ एल्गोरिदम ता कोन पई का ई डाटा स्ट्रक्चर रे आसुची सेटा नीडेड अछि डाटा स्ट्रक्चर रे? Algorithm present mu कहनी mu algorithm we have to write an algorithm, then how to present the algorithm that I have told you here how to present an algorithm, how to represent an algorithm, that I told you. You see, whenever you are writing an algorithm, it is not necessary ki at the first stage you cannot write the program, you have to first design it. If I will ask you now, you find the average of 5 numbers, सीधा हमें बस सी प्रोग्रामिंग लिखिबा कि ना हमें कोन करिबा तार सुडो कोड लिखिबा, तार फ्लो चार्ट बनैबा, तापरे हमें ता पई प्रोग्रामिंग लिखिबा। भाबिनियो तमे जते बेले गोटे इंडस्ट्री को जाउछो, भाबिनियो गोटे जॉब रे पसिला परे गोटे कंपनी रे भाबिनियो 50 टा एम्प्लॉय अछंती, समस्त कोन प्रोग्रामिंग जानि थांती ना, जानिबा दरकार भी नै। ता भितर जण बहुत जण थांती जो माने सीनियर पोस्ट को पळै थांती, सेमान सब थांती एनालिसिस, सेमाने सिस्टम टाको एनालिसिस करिवे, गोटे जागा को जाईकी तांकर क्लाइंट साइड को जाईकी सिस्टम टाको बुझिबे, ताको ड्रॉ करके देई देबे एई प्रॉब्लम टाको सॉल्व करिया पई कोन कोन हमको एल्गोरिथम दरकार, सेमान ताको राइटिंग रे दे देबे, सुडो कोड लिखि दे देबे। तो जो माने नुआ पिला सब थांती 2 3 4 इयर्स 5 इयर्स एक्सपीरियंस, सेमाने सब प्रोग्रामिंग लिखंती तार, हां किंतु एनालिसिस मान को काम कोन हला, दे डिड द
they studied the system, they designed the algorithm, and they gave the work in form of a pseudocode. ସେମାନେ ପ୍ରୋଗ୍ରାମିଂ ଲେଖା ପାରନ୍ତିନି, ସେମାନଙ୍କୁ ତମେ ପଚାରିବ ଜାଭା ଜାଣିଛୁ କି ନାହିଁ, ସେ କହିବେ ମୁଁ ଜାଣିନି ବି, କରୁଥିଲି ଆଗେ ଏବେ ଭୁଲି ଗଲିଣି। କାହିଁକି ନା ସେମାନେ ଆଲଗୋରିଦମ ଟାକୁ ଲେଖିକି ଦେଇଦେବେ, ସୁଡୋକୋଡ ବନେଇକି ଦେଇଦେବେ, ତାକୁ ଆମର ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ ର ଯୋଉ ମାନେ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ ଷ୍ଟେଜ ର ଏମ୍ପ୍ଲୟି ମାନେ ଥାନ୍ତି ସେମାନେ ତାକୁ ପ୍ରୋଗ୍ରାମିଂ କରନ୍ତି। ତେଣୁ ଏଭ୍ରି ଆଲଗୋରିଦମ ହ୍ୟାଜ ଟୁ ବି ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟେଡ, ତାକୁ ଆମେ ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ଫ୍ଲୋ ଚାର୍ଟ, ସୁଡୋକୋଡ ଏଗୁଡାକର ହେଲ୍ପ ନଉ। ଦେ ଆର୍ ଦ ଟୁଲ୍ସ, ଏଗୁଡାକ ଆମେ କଣ କହୁ, ଦ ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟେସନ ଅଫ ଆଲଗୋରିଦମ ୟୁଜିଂ ଦିସ୍ ଟୁଲ୍ସ, ଦେ ଆର୍ ଦ ଟୁଲ୍ସ ଟୁ ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ଦ ଆଲଗୋରିଦମ। ହେଲା, ମୁଁ Thank you, ଭାବୁଛି ଆନ୍ସର ପାଇଲ ଏବେ କିଛି। Okay, ଆଜ୍ଞା so sir। they are the tools. Okay, thank you. So they are the tools to represent the algorithm. Now what I am telling you, whenever an algorithm is written, same କାମ କୁ କରିବା ପାଇଁ ଏହି ପ୍ରକାର ଦି ଜଣ ସ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ, ଦି ଜଣ ଏମ୍ପ୍ଲୟି ଦିଟା ଡିଫରେଣ୍ଟ ଟାଇପ ର ଆଲଗୋରିଦମ ତିଆରି କରିକି ଦେଲେ ସେମ କାମଟା କରିବା ପାଇଁ। ତ ଏବେ ଆମେ ଡିସାଇଡ କରିବା କି କୋଉଟା ଭଲ। ସବୁ ଜିନିଷରେ ଆମେ ଭଲ ଖରାପ ଖୋଜୁ। ଯେତେବେଳେ ତମେ କୌଣସି ଜିନିଷ ବି କିଣିବାକୁ ଯାଉଛ, କହୁଛ କମ୍ପେୟାର କରୁଛ ଦିଟା ଭଲ ନା ନାହିଁ, ସେମିତି ଆମେ ଆଲଗୋରିଦମକୁ ବି କମ୍ପେୟାର କରିବା। ଏ ଦିଟା ଆଲଗୋରିଦମ ସେମ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ କୁ ସଲ୍ଭ କରାହଉଛି, ମୁଁ ସେମ କପଡା କିଣିବାକୁ ଯାଉଛି, ସେମ ଡ୍ରେସ ମେଟେରିଆଲ କିଣିବାକୁ ଯାଉଛି, ମୁଁ କମ୍ପେୟାର କରୁଛି କି ଏ ଡ୍ରେସ ମେଟେରିଆଲ ଭଲ ନା ସେ ଡ୍ରେସ ମେଟେରିଆଲ ଭଲ। ତ ସେତେବେଳେ ଯଦି ଡ୍ରେସ ମେଟେରିଆଲ କିଣିବାକୁ କମ୍ପେୟାର କରୁଛି, କଣଟା ନେଇକି କମ୍ପେୟାର କରୁଛି ନା କଷ୍ଟ ହିସାବରେ କୋଉଟା ଭଲ, ଲଞ୍ଜିଭିଟି ହିସାବରେ କୋଉଟା ଭଲ, ମାର୍କେଟର ନୂଆ ଷ୍ଟାଇଲ ଅନୁସାରେ କୋଉଟା ଭଲ। ତେଣୁ ମୋର କଷ୍ଟ ହିସାବରେ ଯୋଉଟା ମତେ ସବୁଠୁ ଭଲ ଜିନିଷଟା ମତେ ମିଳୁଛି ମାର୍କେଟରେ, ମୁଁ ସେଟାକୁ ପରଚେଜ କରୁଛି। ଇନ ଦ ସେମ ୱେ, whenever for the same problem people are writing 10 algorithms, we have to decide which algorithm is the best. ତ ଏଇଠି ତ ମୁଁ ଲଞ୍ଜିଭିଟି କମ୍ପେୟାର କରିପାରିବିନି, ଏଇଠି ମୁଁ ତ ତାର ଲେନ୍ଥ ଟା କମ୍ପେୟାର କରିପାରିବିନି, ଏଇଠି ତ ମୁଁ ତାର କ୍ୱାଲିଟି କମ୍ପେୟାର କରିପାରିବିନି। ମତେ ଏଇଠି ଦିଟା ଜିନିଷ କମ୍ପେୟାର କରିବାକୁ ପଡିବ। କଣ ସେ ଦିଟା ନା ଟାଇମ କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସିଟି ଏଣ୍ଡ ଦ ସ୍ପେସ କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସିଟି। So we have to compare the time complexity and the space complexity of the algorithm. ମୁଁ ଏଠି ଏଇଟା କମ୍ପେୟାର କରିବିନି କି ଏ ଆଲଗୋରିଦମ ଟା ଲେଖିଲେ ଏଇଟା କେତେ ବର୍ଷ ଯାଏ ରହିବ, ଚିରିବନି। କପଡା ହେଲେ ଆମେ ଡିସାଇଡ କରିବା ଚିରିଯିବ, ତା ଲଞ୍ଜିଭିଟି କେତେ, କେତେ ବର୍ଷ ଚାଲିବ, ଏଟା ତା କଲର କେତେ ବର୍ଷ ରହିବ। କିନ୍ତୁ ଆଲଗୋରିଦମରେ ମୁଁ କଣ କହିବି କି ତା କଲରଟା କେତେ ବର୍ଷ ରହିବ ନା, ଏଇଟା ଆଲଗୋରିଦମ ଟା ମୋ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଟାକୁ କେତେ ଏଫିସିଏଣ୍ଟଲି ସଲ୍ଭ କରିବ, କେତେ କମ ସ୍ପେସ ନେଇକି ସଲ୍ଭ କରିବ, ସେଟାକୁ ଆମକୁ ଷ୍ଟଡି କରିବାକୁ ପଡେ। whenever you are writing an algorithm, you have to study the two factors, two comparison factors, one is time, one is space. The time complexity कौन कहे ना, the time required to execute an algorithm. Time complexity says the time required to execute an algorithm. Time required to execute an algorithm. Time required माने पुणी कौन बुझिबा हमें। ମୁଁ କହିବି ମୋ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଟା ମୁଁ ଲେଖିଲି, ମତେ ରନ୍ କରିବାକୁ 10 ମିନିଟ ଲାଗିଲା, ସେମିତି ମୁଁ କହିପାରିବି କି 10 ମିନିଟ ଲାଗିଲା ନା, ସେମିତି ମୁଁ କହିପାରିବି ନାହିଁ। ଏବେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ହଉଛି ମୁଁ କାହିଁକି ସେମିତି କହିପାରିବିନି। ମୁଁ କହିବି କାହିଁକି ପାରିବିନି, ମୋ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଟା ରନ୍ ହବା ପାଇଁ 10 ମିନିଟ ଲାଗିଲା କି 10 ସେକେଣ୍ଡ ଲାଗିଲା। why should not I tell the time complexity of an algorithm in that way? No, it is not possible to tell in that way. ମୁଁ କେବେ ଟାଇମ ଅନୁସାରେ କହିପାରିବି ନାହିଁ। କାରଣ ହଉଛି ଶୁଣ କଣ ପାଇଁ, ଭାବିନେ ତମ ପ୍ରୋସେସର ସ୍ପିଡ ବହୁତ ଭଲ, ଜଣେ ସୁପର କମ୍ପ୍ୟୁଟରରେ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଟାକୁ ରନ୍ କରୁଛି ନାଇଁ, ତାକୁ ହେଇପାରେ 10 to the power minus 1000 ମିଲି ସେକେଣ୍ଡ ଲାଗିବ, 10 to the power minus ମିଲି ସେକେଣ୍ଡ, 10 to the power minus 1000 ମିଲି ସେକେଣ୍ଡ, ମାନେ ଅତି ସ୍ପିଡ ରେ ରନ୍ ହେଇକି ଆନ୍ସର ବାହାରି ପଡିବ। ଆଉ ଜଣେ ହଉଛି ସ୍ଲୋ ପ୍ରୋସେସର ଟେ ୟୁଜ କରୁଛି, ତାକୁ ହେଇପାରେ 10 ମିଲି ସେକେଣ୍ଡ ଲାଗିଲା। ତାହେଲେ ଏବେ ଆମେ କୋଉଟାକୁ ଠିକ କହିବା ନା, ତାର ସୁପର କମ୍ପ୍ୟୁଟରରେ ଯୋଉଟା ରନ୍ ହେଲା ତାକୁ ମୁଁ ଟାଇମ ବୋଲି ନେବି, ନା ଯୋଉଠି ଆମର ଏଇଠି ରନ୍ ହେଲା ମୋ ମେସିନରେ ଯୋଉଟାକୁ ସେଇଟାକୁ ଟାଇମ ବୋଲି ନେବି। I cannot say, କହିପାରିବି। କିନ୍ତୁ ଆମ ପାଖରେ ଯେତେବେଳେ ଅଲଗା ଜିନିଷ ଆମେ କମ୍ପାରିଜନ କରୁ, ସେତେବେଳେ କଣ ହୁଏ, ମୁଁ କହିବି ଚିନି 2 କେଜି ମତେ ଦରକାର, ମୁଁ ତାକୁ ଯୋଉ ଜାଗାରେ ବି ଓଜନ କରିବି, ମୁଁ କହୁନି ଯେ ମୁଁ ଅର୍ଥ ମୁନ କୁ ପଳେଇକି ଓଜନ କରିବି, ସେଇଠି ଡିଫରେନ୍ସ ଆସିଯିବ। କିନ୍ତୁ ଅର୍ଥ ଯୋଉ ଜାଗାରେ ବି ନେଇକି ଓଜନ କରିବି, ମୋର ସେଇ 2 କେଜି ଟା 2 କେଜି ହିଁ ରହିବ। କିନ୍ତୁ ଟାଇମ ଟା ଯୋଉ ପ୍ରୋଗ୍ରାମିଂ ର ଟାଇମ ଟା ସବୁ ଜାଗାରେ ସେମ ହବନି, ଡିପେଣ୍ଡସ ଅନ ଦ ପ୍ରୋସେସର ସ୍ପିଡ। ତାହେଲେ ଏବେ ଯଦି ମତେ ଜଣେ ପଚାରିବ, ଆଚ୍ଛା ବବଲ ସର୍ଟ ତୁ ଲେଖିଛୁ, ଏଇଟା କେତେ ଟାଇମରେ ତୋର ଏକ୍ସିକ୍ୟୁଟ ହବ, ମୁଁ କହିବି କି ପ୍ରୋସେସର ସ୍ପିଡ ଯଦି ଏତିକି ହବ, ଏତିକି ହବ ତ ଏତିକି ହବ, କହିପାରିବିନି। ବିକଜ ଦେयर ଆର୍ ଭେରିୟସ୍ ଟାଇପ୍ସ ଅଫ ପ୍ରୋସେସର ସ୍ପିଡ। ତ ଆମେ ସେଇଠି ନୂଆ ଗୋଟେ କନସେପ୍ଟ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଟେକ୍ନିକ ଦରକାର, ଯୋଉଟା ଦ୍ୱାରା ଆମେ ଟାଇମ ଟାକୁ ମେଜରମେଣ୍ଟ କରିବା। ସେମିତି କଥା ଆସେ ସ୍ପେସ କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସିଟିର, କି ସ୍ପେସ କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସିଟି ଟାକୁ ମୁଁ କୌଣସି
स्क्वायर फीट मीटर सेंटीमीटर एथरे कंपेयर करि परिबिनी ता पय भी मते गोटे मेजरिंग फैक्टर दरकार सेही मेजरिंग फैक्टर गुडा जो आमे यूज करू ताको आमे कहू asymptotic notation asymptotic notation so asymptotic notations are the notations or the units with which we can measure the time complexity as well as the space complexity of an algorithm हमें ये जो नोटेशन द्वारा से गुडा को मेजरमेंट करिबा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी को मेजरमेंट करिबा तो नोटेशन गुडा कोन ए टर्म ता जो आसी एटा कोठु आसी ता विषय में मुझे जाने को पड़ियो so this term or this word has came from the mathematics word asymptotic curve एटा मैं मैथमेटिक्स रो आनी छु टर्म टाकू को टर्म रो asymptotic curve हमको कोन करी कि दिए जदि मैथमेटिक्स रो फंक्शन चैप्टर ए सब पढी थिबो मने थिबो जदि परीक्षा रे क्वेश्चन पड़े sin x रो कर्व टा बनाओ हां sin x plus x square रो कर्व टा बनाओ ता माने कोन as the function grows as the x grows how the behavior of the function gets changed सेटा में स्टडी करू इन asymptotic curve so asymptotic curve gives an idea how the behavior of the function changes with the change of the input माने का फंक्शन लिखली fx equal to sin x plus x square this is let my function so with the change or with the increase of x how this function is behaving सेटा ग्रो करूची ना से स्टेडी स्टेट रे रही जाउची सेटा को हम स्टडी करू जदि मु लिखबी खाली fx equal to sin x हमर x रो वैल्यू जत्ते भी पडू sin x कर्व टा सदा बेले गोटे एमती आसीबो -1 रु +1 भीतर -1 रु +1 भीतर ना बढ़िबो ना कमिबो sin x को तुम x टा को जत्ते बढ़ाओ sin x रो कर्व टा सदा बेले गोटे periodical curve which varies from -1 to +1 but if I will write fx equal to sin x plus x square ये कोन हबो ना जेमिति जेमिति x बढ़िबो तमर x स्क्वायर टर्म गोटे ऐड होची ता सहित तेनु फंक्शन टा बढ़ी बढ़ी जीवो so it is an increasing function fx equal to sin x plus x square जदि मु लिखि देली ताले it is माने not an increasing function कहीं ना तमर ये भी माइनस साइड को आसीबो पुनी पॉजिटिव को जीवो increasing function always grows so but it is a growing function which grows with the increase of x तो ए जो सब asymptotic curve हमको हेल्प करे to study the behavior of the functions with the increase of the input तो हमें सेही जिंसटा को यूज करू छ asymptotic notation कोन कहू छी that it helps us to study asymptotic notation helps us to study the behavior of the functions for the larger input तमे पे मते कहबो एटी फंक्शन कोठु आसी गला हमें तो पढुतले प्रोग्रामिंग करूतले एल्गोरिदम पढुतले फंक्शन कोठु आसी गला तो एनीथिंग एनी प्रोग्राम यू आर राइटिंग any sorts of code you are writing I can represent that in terms of some function मुझे तुमको कहबी मते पांचटा नंबर एडिशन करियर अछि it will always be a constant value काहे पांचटा नंबर मु रीड करबी ऐड करबी but if I will ask you to add n numbers the n may be a variable तो n बढ़िले तम प्रोग्राम रो टाइमिंग बढ़ी जिवो ता माने मु सेठी कोन कहबी fn equal to n because जदि मो पाखे 100 टा नंबर अछि 100 थरा एडिशन हो 1000 अछि 1000 थरा एडिशन तो here the function is it is a function of only a linear thing it is n किंतु मु तमु जदि जेमति कहबी हमें बबल सॉर्ट जेमति पढिथिलो सी रे गत वर्ष मु कहबी I have 100 of elements you arrange them तो सेठी तमे कहबो द complexity of the loop will execute n 100 square times 100 into 100 equal to 100 square times but if I have n number of elements in the array and I will ask you to find the complexity of that code तमे तको मते कहबो n square लेकिन सेठी लूप ता नेस्टेड लूप चले n into n times चले
तो every code can be represented in terms of some function. तापर हम जब फंक्शन रे लिखि दबा तापर हम तार एफिशिएंसी स्टडी करि परिबा एबे तनो गोटे कोड मु लिखुची छोटोटे ताको मु फंक्शन रो फॉर्म रे कन्वर्ट करिया को चेष्टा करिवि तापर हम ताको बुझिबा कि asymptotic help notation ए जिंसटा को करिया पे मते केमिति हेल्प करे देखो मु गोटे कोड लिखुची लिखली फॉर I equal to 1 I is smaller than equal to n I plus plus for j equal to 1 j is smaller than equal to n j plus plus x equal to x plus 1 then for k equal to 1 k is smaller than equal to n k equal to 2k x equal to x plus 1 पुणे मु जदि पचारबी तुमको ए कोडटा केते थरो चलिबो हां ए कोडटा को केते थरो रन करले यार टाइम केते लागबो केते थरो चलिबो रिप्रेजेंट इन टर्म्स ऑफ सम फंक्शन तमे कोन करबो इथरे ना तुमको काढिबार अछि कि ए लाइन टा केते थरो एग्जीक्यूट हबो आ ए लाइन टा केते थरो एग्जीक्यूट हबो फर्स्ट जो x इक्वल x प्लस 1 लिखा है सेटा केते थरो एग्जीक्यूट हबो n स्क्वायर टाइम तो fn इक्वल टू मु लिख देली n स्क्वायर प्लस काहे कि ना नेस्टेड लूप अछि n एंड n दिटा को i भी चलु छी 1 टू n j भी चलु छी 1 टू n तो टोटल रहे गला x इक्वल x प्लस 1 विल एग्जीक्यूट n स्क्वायर नंबर ऑफ टाइम अच्छा एठी जो पुणी लाइन टा अछि x इक्वल टू x प्लस 1 ये केते चलु छी ये चलु छी log 2 n तब मते पचारबो log 2 n काहे आसिला कोठो आसिला देखो k इक्वल टू 1 अछि k इक्वल टू 2k होछि प्रति थर रे k रो वैल्यू टा 2 टाइम्स इंक्रीज होछि 2 टाइम्स तो प्रथम मन 1 थिबो तापर 2 हबो तापर 4 हबो तापर 8 हबो तापर 16 हबो एई प्रकार रे से बढ़ी बढ़ी जाउ तो if the n value is 1024 it will executed only 10 times एगना 2 2 गुण बढ़ी बढ़ी गले तम 10 थर बढ़िबो 10 थर रे से लूप टा स्टॉप हो तो log to n एटा हेगला log to n तनो आकु जदि म फंक्शन फॉर्म रे रिप्रेजेंट करली मु fn को लिखिबे fn इक्वल टू n स्क्वायर प्लस log to n so once it is written in this form using the asymptotic notation you can derive its complexity तनो हमको तबे सब पढिबार अछि what are the different asymptotic notations are available with us and how to use them से पार्ट पे पढिबार तो एवरी कोड ऑफ तमा परीक्षा रे क्वेश्चन गुडा पकांती इति गोटे कोड दे दिथिबे ताकू लिखिथिबे रिप्रेजेंट इन टर्म्स ऑफ बिगो नोटेशन एनो बिगो नोटेशन ए सब पढि साला पारे आमे ताकू डिराइव करिवा किंतु ता आगरो सेई कामटा करिया पे हमको एटाको फंक्शन फॉर्म रे लिखिया को पड़िबो तो मु एठी जो लिखिछि कोड तार जो फंक्शन फॉर्म रे fn = n स्क्वायर प्लस log 2n एटा दरकार पड़िबो आकू धरि करी हमें से नोटेशन अप्लाई करी तार वैल्यू टा बाहर करिवा every time whenever you are getting a code sample of code you have to write the function in terms of its function okay so now I am going to the different types of asymptotic notation the first one is big O notation big O notation and it is represented by big O ओटा big O लिखा जाए ताको पढ़ा भी जाए समति big O notation the second type of notation is big omega notation big omega notation and it is represented by this third is theta notation fourth is little o notation little o notation little o small o टे लिखिबो fifth is little omega notation so there are the various notations to study the different algorithm complexity time complexity as well as the space complexity पांचटा टोटल अछि कोन ना
notation जोटा द्वारा हम स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी एंड टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को स्टडी करिबा। Okay, so now I will tell you the definition of every notation which is little bit mathematical, ताको टिके बुझिबा को पड़िबो केमिति प्रकार हम ताको रिप्रेजेंट करू। You see, yeah, first one is a big O notation. Big O notation. What this says? What this notation says? If Fn and Gn, if Fn and Gn are two functions, are two functions, Fn is equal to big O of Gn if there exists a constant T such that Fn is smaller than equal to T into Gn for all n is greater than equal to n0. So this is the definition of your big O notation. What it says? Now, if Fn and Gn are two functions, Fn is equal to big O of Gn if there exists a constant C such that Fn is smaller than equal to C into Gn for all n is greater than equal to n0. You see, here it is using two functions Fn and Gn. दीटा function रो से कथा कहूची. गोटे Fn function कथा कहूची, गोटे Gn function कथा कहूची. तेणु Fn function टा कौन ना जा पाई हमें एबे केते टाइम लागिवो जानिया को चाहूची. So once Fn is, you want to find out the complexity of Fn, you have to search for a function Gn. You have to design a function, you have to search for a function Gn. जो टिके relationship टा Fn should be smaller than equal to C into Gn हबा कथा. Fn टा smaller than equal to C into Gn हबा कथा. So if I draw a graph for this type of definition, एटा भाबिने मोर Fn अछि, एटा भाबिने Fn function अछि, तो C into Gn कोन होची ना ताठू बड़, ताठू बड़. तेणु C into Gn ताठू बड़. But after the point n0, this is your side of n. N is the input size. This is the input size, and this is the growth of the function. Growth of function. Growth of function. तो एटा मोर Fn, एटा होची Cgn. C into Gn. आको मो कहबी Fn is equal to big O of Gn. ए टाइप रो रिलेशनशिप केतेबेले भी दीटा फंक्शन भीतर आसिला ताहले हमें कहबा Fn equal to C into Gn.
ओके तो एबे मु गोटे जदी क्वेश्चन तुमको देबी मु कहली लेट fn इक्वल टू 2n स्क्वायर प्लस 5n represent fn in terms of big O notation कौन करबे हम कौन देइची ना fn देइची 2n स्क्वायर प्लस 5n 2n स्क्वायर प्लस 5n हमको fn देइची कौन करिबार अछि ना gn बाहर करिबार अछि तो हमें एबे डेफिनेशन पढिले fn शुड बी स्मॉलर देन इक्वल टू c इनटू gn fn स्मॉलर देन इक्वल टू c इनटू gn होबा कथा ता माने मु ऊपर साइड रे गोटे फंक्शन एमिति बाहर करिबी राइट हैंड साइड रे जोटा कि दिस फंक्शन शुड बी स्मॉलर देन इक्वल टू दिस तो मु एठी लिखिबी 3n स्क्वायर माने को मु एठी लिखि 2n square plus 5n is smaller than or equal to 3n square. If I will write this. So is it true for every value of n? Let us check. Let n equal to 1. So this side will become 2 plus 5, 7. And this side will become 3. So it is not true. Not true. If I will give n equal to 2, so this side will become 2 into 4 plus 5 into 2 equal to 18. And this side will become 3 into 4 equal to 12. Again not true. If I will take n equal to 3, so this will become 3, 3, 9, 18 plus 10, 28. And this side will become 3 into 9, 27. Still not true. N equal to 4, this side become 2 into 16 plus 20. अच्छा এটা 15 नहीं था 15 15 33 not true. So 32 plus 20 52. 3 into 16 48. Still not true. N equal to 5. N equal to 5. If I will take n equal to 5, it will become 2 into 25 plus 5n. So 5 into 5 25 equal to 50 75. 3 into 5 square 25 75. This is now equal. So we need this type of, yeah, now this is true. So since this is true, I will say 2n square plus 5n is equal to big O of n square for all n is greater than equal to 5 and constant equal to 3. This is the answer. What I did? Now I tried to find out a function gn, some constant into gn, such that your given function should be smaller than equal to some constant into gn. So we thought for a function 3n square. So we thought for a function 3n square where that function is satisfying that inequality for n is greater than equal to 5. So I am writing 2n square plus 5n is equal to big O of n square for all n is greater than equal to 5 and the constant equal to 3. Achha, for the same question, Achha, there is a question, Lekhichonti, tame, please can you explain the structural example of the linear data structure characteristic? Okay. How there a question achi? Hello, now you are able to see the screen. Screen disuchi na nahi? Yes, sir. Yes.
आउ किछि एबे कार क्वेश्चन अछि पचारिबो चार्ट विंडो रे जनक क्वेश्चन आछि कोन लिखिसंती क्वेश्चन पचारिसंती structural representation of linear data structure. You see, what is the linear data structure? When there is a relationship among the elements is predecessor and successor relationship. ताहले हम तो कहबा linear data structure. तो जेमिति गोटे क्यू जदि मो गोटे array टाको देखिबी केमति थाए array रे ना एलिमेंट गुडा एई प्रकार रे थांती 5 10 15 20 25. So if I will ask you what is the predecessor of 15, तो तमे मते कहबो 10. What is the successor of 15? तमे मते कहबो 20. So whenever there is a relationship among the data elements are predecessor and successor, सेटा को हमें कहू linear data structure. क्यू रे कोन हुए सेमति समस्त लाइन रे ठिया आइचंती एटा गोटे लोक तापर गोटे लोक तापर गोटे लोक सब लाइन रे ठिया आइचंती. तो प्रति एलिमेंट भीतर रे रिलेशनशिप ता जो अछि से प्रेडिसेसर सक्सेसर रिलेशनशिप अछि. लिंक लिस्ट हमें पढिबा आगो को लिंक लिस्ट रे कोन हुए एलिमेंट गुडा एटा गोटे अछि गोटे एलिमेंट रहिला तापर एलिमेंट जो थिबो तार एड्रेस आ पाखरे थिबो. तो प्रति एलिमेंट तार नेक्स्ट एलिमेंट विषय रे इंफॉर्मेशन जोठी देई पारुथिबो हां सक्सेसर प्रेडिसेसर रिलेशनशिप थिबो जोठी सेटा को हमें कहू लिनियर डाटा स्ट्रक्चर. किंतु नॉन लिनियर डाटा स्ट्रक्चर सेमति न थाए. नॉन लिनियर डाटा स्ट्रक्चर रो सबटु बेस्ट एग्जांपल होउची हायरार्किकल अरेंजमेंट ऑफ द एम्प्लॉइज इन एन ऑर्गेनाइजेशन जोठी हमें कहबा फर्स्ट हला ओनर ऑफ द कंपनी सबटु हेड रूट रे रहिला तार तीन जन सबऑर्डिनेट थिबे सेमानंक सब सबऑर्डिनेट थिबे. तो सेठी गोटे हायरार्किकल रिलेशनशिप आसे डाटा एलिमेंट गुडा भितर एम्प्लॉय मानक भितर. तो सेते बेले हमें ताको कहिबो दैट इज ए नॉन लिनियर डाटा स्ट्रक्चर. किंतु जोठी भी एलिमेंट गुडा भितर गोटे प्रेडिसेसर थिबो गोटे सक्सेसर थिबो ताको मु कहबी लिनियर. किंतु हमर एम्प्लॉय हायरार्की कोन होय एटा गोटे अछि ता तळको हे पारे 3 जण अछंती आ तळको हे पारे 6 जण अछंती. तो एई गुडा सब जो डाटा स्ट्रक्चर हमर तयारी होउची एगुडा सब नॉन लिनियर टाइप काहेकि एठी जणंकर सबऑर्डिनेट किबा जणंकर सक्सेसर जणे नाही 5 जण थाई परंती. तो ए टाइप रिलेशनशिप गुडा जोठी तयारी होय ताको हमें कहू नॉन लिनियर डाटा स्ट्रक्चर. जेमति एटा जो हायरार्किकल रिलेशनशिप ता होउची ट्री डाटा स्ट्रक्चर ए गोटे ट्री भले देखा जाय तण हमें कहू याको ट्री डाटा स्ट्रक्चर. सेमति हम ग्राफ डाटा स्ट्रक्चर गोटे अछि जोटा भी नॉन लिनियर. ग्राफ टा हम केतले दरकार पड़े ग्राफ डाटा स्ट्रक्चर जेमति हम कहबी इंडिया रो मैप टा हां इंडिया मैप को नियो को सिटी रो को सिटी भीतर एयरलाइन सर्विस अछि ताकू मते गोटे लाइन ड्रा करी करी देखाओ. तार कोन हो सिटी गोटे नेटवर्क तयारी हबो गोटे नेटवर्क डिजाइन ते तुमको नेटवर्क चित्रटा बनेइबो हां सब सिटी गुडार चित्र बनेइबो तापर चित्र बनेइबो माने ताको गोटे गोटे नोड किबा वर्टेक्स बोली कहिबो ए बी सी डी ताको ना दबो जोठ जोठी फ्लाइट उडुची ताकू तमे गोटे गोटे लाइन रे ड्रा करिवो. तो एटा फाइनली गोटे कोन देखा जिवो गोटे ग्राफ बनि जिवो हां एटा गोटे ग्राफ. ग्राफ माने हम मुंड रे ग्राफ माने हमें बुझू खाली एम्ति चित्र बनिवो एटा गोटे ग्राफ ना खाली एटा ग्राफ नुय हां. तणो ग्राफ मीन्स एनी नेटवर्क टाइप रो चित्र भी मुझे बनेली सेटा भी गोटे ग्राफ. So that is a graph data structure. You know, this is the main difference between linear and non-linear data structure. You know, doing a program for non-linear data structure is difficult as compared to program for a linear data structure. एक linear रे सुविधा कोन होय प्रति एलिमेंट रो आगरे पछरे गोटी एलिमेंट थांती तनो सेथरे काम करिया पे हमको प्रोग्रामिंग करिया पे सुविधा होय. किंतु नॉन लिनियर रे मल्टीपल एलिमेंट्स थांती तो सही कामटा काम करिया पे सदा बेले कष्ट हुए. नेटवर्क प्रोग्रामिंग गुडा नेटवर्क ग्राफ प्रोग्रामिंग गुडा ट्री रा प्रोग्रामिंग गुडा करिया पे निश्चय कष्ट. हां सर आ गोटे क्वेश्चन हां सर जो क्यू स्टाक रे ऑपरेशन हुए इंसर्शन डिलीशन ऑपरेशन अप्लाई हुए ना निश्चय. किंतु सेथरे जो सेटा किमिति हुए सेटा हम चैप्टर पढिबा से गुडा को किंतु एबे जदि स्टार्टिंग हिसाब रे मु बेसिक ता कहिबी मु मानकर कहिबी आपण गोटे जाइचंती रेलवे स्टेशन को टिकट करिया पे हां आपण को कुहा गला यू स्टैंड इन द क्यू जने हमर भिड़ हे जतले पुलिस टे ठिया हिते से कहबो स्टैंड इन द क्यू ताले मु जाई कि कोठी ठिया हेबी सबुट आगरे जाई ठिया हिजिबी कि ना मु लास्ट रे ठिया हेबी मु खोजिबी लास्ट लोकोटा किए वर्तमान को ठिया हिची
ता पछरे जेकी ठिया है। तो बेले बेले कोन होता है से लाइन टा फुल हो जाता है लोक तापर आउ गोटे लाइन बनै देछन पाखा पाखी आउ गोटे लाइन टा बनै देछन काहे जगह नहीं से लाइन टा भर्ती जाईची पाखरे से आउ गोटे लाइन टा बनै देछि हां ताले आमे जेकी सेठी तार माने कर ए फर्स्ट लाइन टा सरी जाईची सेकंड लाइन रे मु जेकी सेकंड पोजीशन रे ठिया हेली ताले मु कहबी कि मु क्यू रे सेकंड पोजीशन रे अछि ना मु क्यू रे अछि 60 नंबर रे काहे कि एई जन 58 जन फास्ट सर्विस पाइबे तापरे मो नंबर सेठी आसीबो हां so though it is looking to be the second position in the standing position but I am the person who will get the service after 59 elements in the queue तो मु सेठी लास्ट रे जेकी ठिया हेबी हां तनो कोन हुए आमे क्यू रे जते बेले इंसर्शन कथा कहू ऑलवेज इज एट द रियर पोजीशन ताको आमे कहू रियर पोजीशन सदा बेले तमे ठिया हबो रियर पोजीशन रे हां किंतु गोटे असुविधा कोन हुए देखो क्यू रे जते क्वेश्चन टा उठाउछ एबे मु कहूची बुझौची भाबिनो बेले बेले कोन हुए तमे देखिथिबो टिकट काउंटर को जीवो टिकट काउंटर रे लोक देखो एम्ति मन कर चेयर पड़ी छि एटा काउंटर टा एठी दीटा सीट खाली अछि आउ दीटा लोक एठी बसि छथि भाबिनो हां तमे आसिलो एठी क्यू रे तमे आसीचो टिकट तमको भी नबार अछि तमे दीटा लोक को कहला अच्छा आपण आगु को जानतु मु सेठी बसिबी अलसो लोक गुडा से जाउ नहंती हां ताले हमें कोन करिबा हमर सेठी प्रॉब्लम होउची जेहेतु वर्तमान क्यू रे जागा नहीं हमें क्यू को छाड़ी के पळेबा कि ना कहबा नहीं नहीं जागा नहीं मु टिकट नेबिनी पळेबी ना हमें कोन करिबा से जागा रे आसिकिरी एठी बसि जिबा तो एबे जल टिकट काउंटर खोलिबो से टिकट का को दबो मु आगरे बसती बोली कोन मते दबो कि ना से दबो से आकु दबो तापरे मो पाखु आसीबो तनो क्यू माने नुहे जे जे आगरे ठिया हे जाईची से आगे सर्विस पाइबो नो तेना हम भूल धारणा हमें क्यू माने कहू जे आगरे ठिया हे से आगे सर्विस पाइबो ता मान क्यू रो माने होउची those who has came fast to the ये to the set will get the service fast to the collection fast जे कलेक्शन रे आगे आसी छि सी आगे सर्विस पाइबो सेटा होची क्यू रो काम हां किंतु हमें छोटे बेले गोटे सिखिचु जोटी लाइन टा लागि छि लास्ट रे जे ठिया हे छि से लास्ट रे ताकू काम सर्विस मिलिबो जे फास्ट ठिया हे छि ताकू सर्विस मिलिबो फास्ट हां किंतु सेमति नुहे आजि काली हमें जो बैंकिंग रे क्यू रो कांसेप्ट यूज करूछु आ लोक जाय कि कोन लाइन लगाउछन कि बैंक में देखो लाइन लगाउछन ना माने कोन करछन गोटे टोकन टे मिल जाउछ ना से बाहर बुला बुली करके आसुछन टोकन डिस्प्ले हला सर्विस नेले गले तो सेठी तो क्यू अप्लाई हला तो प्रथमे कोन होतला क्यू माने हमें भाबुतले लाइन रे ठिया हबा ना लाइन रे ठिया हबा कि क्यू पई दरकार नै यू हैव टू फॉलो द कांसेप्ट ऑफ द क्यू टू इंप्लीमेंट ए क्यू तो हमें भी प्रोग्रामिंग टे करिबा डिफरेंट टाइप रो क्यू हम पाखरे तनो अछि लिनियर क्यू सर्कुलर क्यू एंड सब क्यू अछि सर्कुलर क्यू कोटा एबे जे मु एटा एग्जांपल टा देली एटा होची सर्कुलर क्यू जदि आगरे जागा खाली अछि पछरे किंतु लोक जे बसी पड़ी छंती हमें आसी के आगरे बसिले किंतु सर्विस नेला बेले को सेमानन को काम सरीबो तापरे हमकु मिलिबो सेटा को हमें कहू सर्कुलर क्यू तनो क्यू टा को हमें कहू इट फॉलोज द फिफ्थ ऑर्डरिंग फास्ट इन फास्ट आउट ऑर्डरिंग जे आगे आसी छि से आगे सर्विस पाइबो जे परे आसी छि से परे सर्विस पाइबो तो एटा को हमको मेंटेन करी करी ता ऊपर काम करिया को पड़े प्रोग्रामिंग करिया को पड़े सर आउ गोटे क्वेश्चन बिल्कुल सर जो क्यू जदी फुल हे जिवो आपण कहले ना टिकट काउंटर से गोटे अछि गोटे जदी से लाइन टाई फुल हे जिवो आउ तो मतलब हमर 5टा कि 10टा लोक तो नांती हला टिकट करिया पे बहुत सारा अछंती 1000 अछंती तो से लाइन टा जदी फुल हे जो बाकी जो माने रहबे जो माने टिकट करिया पे से माने से कोठी रहबे सुनंतो तनो क्यू रो गोटे साइज थाए मैक्सिमम साइज आज जदी कुआ हला आज एई टिकट काउंटर रो मु मैक्सिमम 100 जण ही टिकट नेबे सर से बुझिले 100 जण मैक्सिमम ही साइज टा हमें डिक्लेयर करबा ना बिल्कुल बिल्कुल आपण ही डिक्लेयर करिवे मैक्सिमम साइज आज्ञा सर बट व्हेन इट इज ए दैट आल्सो डिपेंड्स ऑन द इंप्लीमेंटेशन व्हेन इट इज ए लिंक लिस्ट जते हमें पढिबो लिंक लिस्ट जते पढिबो सेठी मैक्सिमम साइज ता हमर हेई जाय मेमोरी साइज ऊपर तम सिस्टम रे केते मेमोरी कैपेसिटी से धरि पारुची हां जदी भाबिने मोर 4GB रैम अछि 4GB रैम अछि आ मते गोटे एलिमेंट स्टोर होवा पई 100 कोन बाइट लागुची गोटे एलिमेंट स्टोर होवा पई 100 बाइट लागुची ताले 4GB रैम मोर केते रे भर्ती हि जिवो 40000 into 100 सेतिके एलिमेंट जते हबो
40,000 नहीं 40 लाख into 100 ସେତିକିଟା ଯେତେବେଳେ ଏଲିମେଣ୍ଟ ହବ ମୋର ଷ୍ଟୋରେଜ ଟା ଭର୍ତ୍ତି ହେଇଯିବ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ତ ଏବେ କଣ 40 ଲାख ଟା ଏଲିମେଣ୍ଟ ବନେଇବନି ଦେଖିବାର ନାହିଁ କଣ ସେ କରିବାର ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ମଲ୍ଟି ୟୁଜର ଏନଭାୟରନମେଣ୍ଟ ରେ କାମ ହୁଏ ଗୋଟେ ସର୍ଭର ଅଛି ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ଲାଗିଛନ୍ତି ଲକ୍ଷ ଲୋକ କ୍ଲାଏଣ୍ଟ କୁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ ପଠାଉଛନ୍ତି ସର୍ଭର କୁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ ପଠାଉଛନ୍ତି ତ ବେଳେ ବେଳେ ଆମର ଆସିଯାଏ ସର୍ଭର ଫୁଲ କଣ ପାଇଁ ନା ସମସ୍ତେ ଯୋଉ ନୋଟ ଟା ତିଆରି କରିଛନ୍ତି जो मेमोरी एक्सेस करूछंती से तमरो मेमोरी टाको रैम टाको फुल करताला ताले से जगह रे एस जाय कि द क्यू फुल्स और द स्टैक ओवरफ्लो ए टाइप रो मेसेज आस जाय तनो हमें जदि टिकट काउंटर रो एग्जांपल को नै को बुझिया को चेष्टा करिवा मोर मैक्सिमम साइज आजि मन को डिफाइन हे जायछि द मैक्सिमम साइज फॉर द क्यू इज 100 हां ता माने 100 जण जदि लाइन रे ठिया जायछंती तापर जदि गोटे लोकटे आसीबो ताकू से जगह रो बाहर करि दिया जिवो कोआबो तते जाउ जगह नै तू एठी ठियाई परिबु नाही तनो फास्ट जे छाडी के जिवो सेकंड लोक आसीबो दी जण छाडी के जिबे आ दी जण जॉइन करि परिबे तो मु कहली परा एवरी डाटा स्ट्रक्चर व्हाटएवर यू आर डिजाइनिंग यू आर यूजिंग इज डिजाइन्ड बाय यू एंड यूज्ड बाय यू तमे तयारी करबो तमे यूज करबो हां किंतु क्यों मु करूची बोली मते निश्चय से जो फिफो ऑर्डरिंग टाको फॉलो करिया को पड़िबो किंतु इट डिपेंड्स ऑन द प्रोग्राम तमरो साइज केते अछि मेमोरी रे जदि मेमोरी जणे गोटे खाली हैला आउ जण को मु से जगह देबी ना नाही हां बेले बेले कोन टिकट काउंटर से कहंती कि आज मु 100 जण को ही टिकट देबी आज मैक्सिमम 100 लोक को ही टिकट मिलिबो भाबिना बे 50 जण लाइन रे ठिया हिचंती 51 जण आसीला से ठिया हो गइना ताको 100 जण भीतर से आसुची किंतु टिकट नै नै भाबिना पळेलेनी 99 जण पळेलेनी जण ही ठिया हिच काउंटर रे आउ गोटे लोक आसीला से जगिबो कि से क्यू रे ना काई तारो जदियो क्यू रे गोटे लोक ठिया हिची आउ गोटे लोक आसीले से जगिले लाभ नै because the service today is saying we will give service only to 100% तेणु आउ जने आसी से ठिया हबार किसी दरकार नै ताको काई ऑलरेडी the counter has given 99 tickets and only that final person which is in the queue will get the service तेणु मगर सब जिंस तमरो रिक्वायरमेंट अनुसार डिपेंड करे कि कोनटा मोर रिक्वायरमेंट कोनटा सिस्टम डिमांड करूची हमें ताको को प्रकार प्रोग्रामिंग करिवा देखो डाटा स्ट्रक्चर जदि हमें एज ए स्टूडेंट फॉर द फर्स्ट टाइम पढुचू ए सब्जेक्ट हमें सेते भलो कि ताको इंप्लीमेंटेशन ता बुझी पारु ना हो किंतु जने बहुत फील्ड रे काम करिछि काम आज माने इग्नोर कोन होची तमे माने जो स्टूडेंट अछो तमे माने बहुत जॉब रे थाकी पढुचो तनो प्रैक्टिकली बुझी पारो जिंस गुडा किंतु जतले हमें फ्रेशर पिलान को पढाइबू ताको जे मु क्यू रो 100 टा एग्जांपल देबी से कंफ्यूज हे छी हां जो माने विथ जॉब सिस्टम को देखिचो दुनिया देखिचो तांको मु क्यू को बुझेइबी मु 10 टा एग्जांपल लेनी विभिन्न प्रकार रे बुझेइबी तनो इट डिपेंड्स मु केते मोर बुझीबार शक्तिटा रहउची किंतु फॉर द प्रोग्रामिंग now you don't have to go into many areas only you have to follow the FIFO ordering and you have to do the programming किंतु मुझे ताको जतले प्रोग्रामिंग करिबी मे बी फॉर मोबाइल एप्लीकेशंस मे बी फॉर क्लाउड एप्लीकेशन मे बी फॉर सम अदर एरिया तो मते सेही प्रॉब्लम ताको भी बेस करके मते काम करिया को पड़िबो बट व्हाट द प्रॉब्लम नीड हला आउ किछि क्वेश्चन हाँ सर सर जो प्रोसेसर थाए प्रोसेसर को टाइम दिया ही थाए ना से हिसाब रे एग्जीक्यूट करिवे प्रोसेसर को टाइम के दबो मतलब हमर कमांड दबो सीपीयू देखो प्रोसेसर को हमें शेड्यूलिंग जतले हमें करू शेड्यूलिंग जते ऑपरेटिंग सिस्टम टिके मने अछि पढिचो जानिचो हमें जते शेड्यूलिंग करू दैट वन टाइप ऑफ शेड्यूलिंग इज FIFO शेड्यूलिंग फास्ट कम फास्ट आउट शेड्यूलिंग हां आउ गोटे टाइप रो शेड्यूलिंग तमे यूज करो राउंड रॉबिन शेड्यूलिंग तो जोटा हमें फास्ट कम फास्ट शेड्यूलिंग यूज करू सेठी मोर क्यू यूज हुए तो जतले हमें राउंड रॉबिन शेड्यूलिंग यूज करू सेठी तो क्यू यूज हुए किंतु सेटा डायरेक्ट क्यू नुहे सेटा इनडायरेक्ट वे रे क्यू यूज हुए गोटे तार मु बेस्ट एग्जांपल दोछि तमे भाबि नियो चार जण लोक गोटे किरानी दुकान को गला जिंस किनिया पे हां गोटे लोक फास्ट लोक कोन करछि ना 100 टा जिंस किनिया पे लिस्ट धरिछि सेकंड लोक दीटा लोक जिंस किनिया पे धरिछि सेमति थर्ड लोक चारटा चतुर्थ लोक पांचटा जदि एबे दुकानी कहबो मो प्रथम लोकटा को पूराटा जक जिंस देबी तापर अन्य माने को देबी अन्य माने सब क्यू छाडी की पळेबे तमे ठिया हेबे कि से तोर 100 टा लिस्ट तो सॉरी जे हमें कोन जगिबु की अच्छा किंतु सी यदि कहबो नै मु जो एमन को दे देबी आगे एमन को छोट छोट आइटम कम आइटम अछि फास्ट लोक छाडी की पळेबो तो दुकानी सदा चाहिबो मु कोन करबी ना मु समस्त को केंदे एंगेज करके रखिबी तनो से करे कोन प्रथम लोकटा को दुईटा आइटम दे दबो द्वितीयटा को दुईटा दे दबो तृतीयटा को दुईटा दे दबो चतुर्थटा को दुईटा दे दबो
ଦିଟା ଦେଲା ବେଳେ जो सेकंड लोकर दिटा आइटम रो नीड थिला तार काम सरी गेला से छाडी की पळेला तार हेई गला अन्य माने भाबुचन हां हमें सर्विस पाउछु तनो से माने जॉइन हे की रहिबे सिस्टम रे हां तो सेठी में राउंड रॉबिन शेड्यूलिंग यूज करू सेठी तुम कहलो प्रोसेसर को जे हमें टाइम ता मेंशन करके दो सेटा हमें मेंशन करके दबा ना फर्स्ट एवरी जॉब तो केते टाइम एटा को एग्जीक्यूट कर तो 2 सेकंड कर तापर पुनी नेक्स्ट 2 सेकंड अलगाटा को जा तापर 2 सेकंड आउटरा को जा से भी से क्यों यूज करूची किंतु टर्न अराउंड क्यू से टर्न द्वितीय पुणे से प्रश्न को तरीके आसिला ए टाइम से टाइम में कि प्रति टाइम किंतु जनरल क्यू रे कहबी सरीबो द्वितीयटा चलीबो द्वितीय सरीबो तृतीय चलीबो हां सेमति प्रकार यूज कर कहले पूरा सबुटा डिपेंड करे तम एप्लीकेशन ऊपर तन डाटा स्ट्रक्चर सब्जेक्ट ता बहुत भलो भाबरे पढिबा कथा एबे तमे कोनोसी भी फील्ड को जाओ काम करो डाटा स्ट्रक्चर निहाती दरकार अदर देन द वेब डेवलपमेंट हां अदर देन द वेब डेवलपमेंट मुझे एचटीएमएल पेज बनौची ताहाले मते कोनोसी डाटा स्ट्रक्चर दरकार नहीं सेठी मते सेटा गोटा आर्ट दरकार जेने सुंदर दिसिबो पेज ता सेटा दरकार तनो अदर फील्ड रे एटा दरकार हां आ कोन क्वेश्चन सर आपण गोटा कहले कि फर्स्ट इन फर्स्ट आउट हम फॉलो करे अछि कोथरे क्यू रे हां देन आपण कहले गोटे क्यू रे धरा गोटे धरा चारिटा सेल मोर अछि मते डाटा इनपुट करे अछि तो चारटा सेल रो धरा मोर चारिटा सेल रो फर्स्ट सेल दीटा मोर वैकेंसी अछि तो गोटे पटे ही नै परिबो गोटे पटे इन जो पटे आर पटे आउट होबो तो तबर गोटे पटे ही इन करे अछि तो धरा मो फर्स्ट जो दीटा अछि सेल मोर फर्स्ट दीटा सेल ब्लैंक अछि तो थर्ड सेल रे मो गोटे धरा डाटा स्टोर करली क्वेश्चन बुझी गले मो करूची हां देखो एठी टिकट काउंटर अछि आज्ञा एठी दीटा लोक बसी नाहंती तृतीय लोक एठी बसीची चतुर्थ लोक एठी बसी हला एमती बसचंदी तो एबे जदी एई सिचुएशन में पचारिबी किए सबुठो प्रथमे आछि तमे कोन कहबो ये सबुठो प्रथमे आछि तापर ये आछि तापर मु आछि एठी बसी पड़िची मु थर्ड बोली निजको कहली हां एबे जदले काउंटर खोलिबो से पचारिबो हां कोन सर मो क्वेश्चन आइडिया छी कि धरा गोटे सेल जदी मु ब्लैंक रखी की फर्स्ट सेल को मु ब्लैंक रखी की थर्ड सेल रे डाटा स्टोर करनेली देन मु फोर्थ स्टोर भी डाटा स्टोर करनेली ता परे जाई की फर्स्ट जोटा फर्स्ट सेल माने वैकेंसी अछि सेठी नै की ता परे मु डाटा स्टोर कर परबी की ना सेही सेल रे जो डाटा अछि 3 नंबर सेल टाकू सेटा 3 नंबर 1 नंबर नवा पड़िबो नहीं नहीं तेणु ताहले हमर क्यू एडवांटेज हमको मिलिबोनी हमें जो क्यू डाटा स्ट्रक्चर यूज करिबा एटा आरए नुहे आरए यूज करले हमको तो शिफ्ट करिया को पड़िबो तो आरए रो ड्रॉबैक ता सेटा आरए रो ड्रॉबैक कि ताहले टाइम कम्प्लेक्सिटी बढ़ी जाए तो हमें क्यू रे कोन करले एठी जदी खाली अछि हमें लोकटा कोन के एठी बसै देले थर्ड रे एबे देखो सुनो काउंटर जे खोलिबो काउंटर जाई करी आकु भाबी जो सर्विस दोची एबे काउंटर पचारिबो कि को लोक फास्ट आछि मु ताकू टिकट देबी हां तापर ये नै कि पळेला त माने ये तम फ्रंट थिला ये रियर थिला वर्तमान आको हमें फ्रंट बोली कहू आको रियर बोली कहू हां तमे एटा को शिफ्ट करिनो तमे ताकू कहि जे तू बस्ता सेठी मोर असुविधा नै whenever the counter opens it gives the ticket to the person which is sitting on the one position रे जे अछि एटा वर्तमान तमर one position एटा वर्तमान तमर one position आप one सर्विस नै तापर 2 नो तापर 3 नो चाहे बसिछि बोले किछि मिलिंग नाही Q is a data structure, it's a concept which is you give the service to the person who has entered first into the queue. से कोठी बसिछि ता संगे मतलब नाही हला तेनो हमें ताको जेतले इंप्लीमेंट करू आरए रे करू किबा लिंक लिस्ट रे करू जेतले हम आरए रे करिबा जेमति तमे बे कहिलो मो पाखरे दीटा सेल खाली अछि मो थर्ड रे जदी लोकटा को बसैछि तापर आने कि नुवा लोकटा को वर्तमान कि फास्ट रे बसै देली सर्विस बेले जे पछरे एठी बसछि से आगे जेतु आछि ताकू मिलिबो से सरीबो तापर ये सेकंड वाला सरीबो तापर ये थर्ड वाला को सर्विस मिलिबो टाइम तो टाइम इंसर टाइम अनुसार ये आगे आछि ताकू सर्विस मिलिबो यस सर ना किछि पचारु जंजी ना सर ठीक है सर मटेरियल रखी से देखिबो गोटे सर्कुलर क्यू थिबो हां ए जो कांसेप्ट हम बे कथा वार्ता करू छु दैट इज सर्कुलर देयर आर टू टाइप्स लिनियर क्यू सर्कुलर क्यू लिनियर क्यू हम कोन
ଯଦି ମନେକର ଏଇଟା ଲୋକ ଖାଲି ଅଛି, ତୃତୀୟ ଲୋକ ଏଇଠି ବସିଛି, ଚତୁର୍ଥ ଲୋକ ଏଇଠି ଅଛି, ତମେ ଆସିଲ କ୍ୟୁ ରେ ବସିବାକୁ ଚାହୁଁଛ, ସିଏ ଆଲାଉ କରିବ ନାହିଁ। ଏଟାକୁ କୁହାଯାଏ ଲିନିୟର କ୍ୟୁ। ଏଇଟା ହିଁ ତାର ଡ୍ରବ୍ୟାକ୍। ଲିନିୟର କ୍ୟୁର ଡ୍ରବ୍ୟାକ୍ ହେଲା ଯଦି front ଜାଗା ଖାଲି ଯୋଉ allow କରିଦବ। ତାକୁ ଦୂର କରିବା ଏ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଆସେ ରିଅଲ ଲାଇନ ରେ ଠିଆ ହେଇଛି, ଗୋଟେ ଲୋକ ଥିବେ ଯିଏ କହିବେ ନା ମୁଁ ଯିବିନି ଆଗକୁ, ଯା ସେ ଜାଗାରେ ଠିଆ ହେଇଛି, ମିଳିବ, ତେଣୁ ଝଗଡା କରନି। ସେଟା ସର୍କୁଲାର କ୍ୟୁ ହେଇଗଲା। ସାର୍ ଯଦି ଟାଇମ୍ ହିସାବରେ ତା କାମଟା ସରିନଥିବ ତାହେଲେ ସେ କ'ଣ ୱେଟ୍ କରିବ? କାହାର କାମ ସରିନଥିବ, ଫାଷ୍ଟର ନା କାହାର? ସାର୍ ଟାଇମ୍ ହିସାବରେ ଯଦି ଥର୍ଡ଼ର କାମ ସରିନଥିବ ତାହେଲେ ସିଏ କ'ଣ ୱେଟ୍ କରିବ? ତେଣୁ ଆମେ କାହାର ଟାଇମ କଥା ଉପରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଛୁ କୁହନ୍ତୁ? ମୁଁ ସେଇଟା ବୁଝିପାରୁନି, କାହାର ଟାଇମ ଉପରେ ପଚାରୁଛନ୍ତି କଥାବାର୍ତ୍ତା? ସାର୍ କୋଉ ମୋ ଟାଇମ ଉପରେ ପଚାରୁଛନ୍ତି? କୋଶ୍ଚିନ୍ଟା ହେଲା ଏ ଯେଉଁ ଆମର ଯେଉଁ ଥର୍ଡ଼ ଲୋକ ଅଛି, ଥର୍ଡ଼ ଲୋକ ଫର୍ଷ୍ଟ ସର୍ଭିସ୍ ପାଇବ। ତ ଫର୍ଷ୍ଟ ସର୍ଭିସ୍ ଯେତେବେଳେ ପାଇବ ସେତେବେଳେ ହେଲା ତାର ଯଦି ସେଇ ଟାଇମ୍ ତାକୁ ଦିଆଯାଇଥିବ, ମତଲବ 5 ମିନିଟ୍ ଟାଇମ୍ ଦିଆଯାଇଥିବ, ଯଦି ଆମେ ସିଡ୍ୟୁଲ୍ କରିଥିବା 5 ମିନିଟ୍ ଟାଇମ୍ ହେଲା, ତ 5 ମିନିଟ୍ ଟାଇମ୍ ଯଦି ତାକୁ ଦିଆଯାଇଥିବ ତାହେଲେ ସେଇ 5 ମିନିଟ୍ ଟାଇମ୍ରେ ତାର ସରିନଥିବ କାମ। ଟାଇମଟା କିଏ ଦେଇଥିବ? ସେ ଟାଇମଟା କିଏ ଦେଇଥିବ? ଟାଇମ୍ଟା ମତଲବ ସେଇ ଆପଣ ଥାର୍ଡ ଆଣିକି ବସେଇଛନ୍ତି ଆଗରେ। ସାର୍ ଟାଇମ୍ଟା ମତଲବ ସେ ଟିକେଟ୍ କାଉଣ୍ଟର ବାଲା ଯଦି ଦେଇଥିବ ତାହେଲେ ତ ତାର କାମ ଯଦି ସରିନଥିବ ତାହେଲେ ସେ କେଉଁଠି ରହିବ? ୱେଟିଂ ଷ୍ଟେଟ୍ରେ ରହିବ। ଆପଣ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କର 2ଟା ଭିତରେ କରି ହିଁ ଦେବି, ଟାଇମ ତ ଦେଇନଥାଉଛି। ଫାଷ୍ଟ ର ହଉ ସାର୍। ସେକେଣ୍ଡ ସେତିକି ଡିପେଣ୍ଡ କରୁ ତ 1 ର ଯଦି ଜବ୍ ଟା କାମ ହେବା ପାଇଁ 5 ମିଲି ସେକେଣ୍ଡ ଲାଗୁଛି, 5 ମିଲି ସେକେଣ୍ଡ ନ ହେବା ଯାଏ 2 ୱେଟ୍ କରିବ। 2 ରେ ଯଦି ଜବ୍ ଟା ସରିବା ପାଇଁ 3 ମିଲି ସେକେଣ୍ଡ ଲାଗୁଛି, ସେତିକି ନ ସରିବା ଯାଏ 3 ୱେଟ୍ କରିବ। ସେମିତି ୱେଟିଂ ରେ ରହିବେ, ସେମାନେ ସବୁ ୱେଟିଂ ଷ୍ଟେଟ୍ ରେ ଥାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଆଉ ଗୋଟେ ଆମର ପ୍ରୋସେସିଂ କରିବାର ଶକ୍ତି ଥାଏ ରାଉଣ୍ଡ ରବିନ୍, ଯୋଉଥିରେ ଆମେ କହିଦବା ନାଇଁ ପ୍ରତିର ଟାଇମ ସ୍ଲଟ୍ ଟା 2 ମିଲି ସେକେଣ୍ଡ ଡିଫାଇନ୍ କରିଦେବି। ଯଦି 1 ର 2 ମିଲି ସେକେଣ୍ଡ ଭିତରେ ନ ସରୁଛି, ମୋର ସେ ଜବ୍ ଟା ତାପରେ ଅଧାର ସରିଥିବ, ଆ ପାଖକୁ ପଳେଇ ଆସିବ, ତାର ଅଧା ସରିବ, ଆ ପାଖକୁ ପଳେଇ ଆସିବ। ସେମିତି ବି ଆମେ କରିପାରୁ। ସେଇଟା ବି ଗୋଟେ ତରିକା ଅଛି, ରାଉଣ୍ଡ ରବିନ୍ ସେଡ୍ୟୁଲିଂ ଯୋଉକୁ ଆମେ କହୁ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଏବେ ସେ ସବୁ ପଢିବା ଦରକାର ନାହିଁ, ସେଟା ଅପରେଟିଂ ସିଷ୍ଟମର ପାର୍ଟ। ଓକେ ସାର୍, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସାର୍। ନା ଆଉ କିଛି ପଚାରୁଛନ୍ତି? ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସାର୍, ଏତିକି କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଥିଲା। ହଉ ତାହେଲେ ଆଜି ପାଇଁ ମିଟିଂ ବନ୍ଦ କରିବା। ଆଜ୍ଞା ସାର୍। ଓକେ, ତାହେଲେ ଆଜି ପାଇଁ ମିଟିଂ ବନ୍ଦ କରିବା। ଆମେ ଆଜି ପଢିଲେ କଣ? ବିଗ୍ ଓ ନୋଟେସନ ର ମୁଁ ଡେଫିନେସନ ଟା ଆଜି କହିଛି। କ୍ଲାସିଫିକେସନ ଅଫ ଡାଟା ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ପଢିଲେ, and operations of a data structure ପଢିଲେ, and how to measure the time and space complexity of the algorithms ପଢିବାକୁ ଯାଉଛେ, ଯାହାର କି କେବଳ ବିଗ୍ ଓ ନୋଟେସନ କହିଛି। ଆଉ ଏବେ ଯଦି ମେଟେରିଆଲ ରଖିଛନ୍ତି ତାକୁ ପଢି ପଢି ଚାଲନ୍ତୁ, ନହେଲେ ସବଜେକ୍ଟ ମାନେ ଏମିତି ନାହିଁ କି ଆମେ ରାତିରେ ପଢିକି ପରଦିନ ତାପରେ ପରୀକ୍ଷା ଦେଇଦବା, ହବନି। ଆମକୁ ରେଗୁଲାର ଟିକେ ପଢିବାକୁ ପଡିବ ସବଜେକ୍ଟ ଗୁଡା। ତେଣୁ ଟିକେ ଟିକେ ପଢୁଥାନ୍ତୁ, ଅପ୍ ଟୁ ଆମେ ଏବେ ସେତିକି ଆଟଲିଷ୍ଟ ପଢିପାରିବେ ହେଲା। ହଉ, ଆଜି ଏତିକି ମିଟିଂ ବନ୍ଦ କରିବା। ଓକେ, जी ବାଏ। सर, ଥ୍ୟାଙ୍କ थैंक ୟୁ यू सर। ସାର୍।